अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, तो मिलते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट से। तो हमारे साथ रईस अहमद बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं इस हवाले से क्यों वो एक पेज रन करते हैं जिस पे 1 लाख से ऊपर इनके फॉलोअर्स हैं। ग्रामर या डिफरेंट जो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रिंसिपल्स रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। आज इस नशिस्त में उनको मदऊ करने का मकसद ये था कि कुछ दिन पहले पॉडकास्ट लिसनिंग की ऐप इन्होंने डाउनलोड की जिसका नाम था पॉडकास्ट एडिक्ट। उस ऐप के अंदर ऑडियो पॉडकास्ट एपिसोड्स होते हैं जो आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पे इन्होंने कुछ चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया और कुछ एपिसोड्स इन्होंने डाउनलोड भी किए। ये मौका है इनसे पूछने का, इनकी रिफ्लेक्शन लेने का कि उनका तजुर्बा कैसा रहा तब से लेके अब तक। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो रिफ्लेक्शन है वो एक्सपीरियंस है वो। थैंक यू सो मच। हालांकि मैं पहले से ये सुनता आ रहा था लेकिन मैं कोई सीरियस नहीं था इन चीज़ों के बारे में। जब आपने मुझे कहा ये पॉडकास्ट सुने तो मैं सुनता आ रहा हूँ। जो ट्रेनर हैं एजे, उसका ये कहना है कि डोंट स्टडी इंग्लिश, प्ले विथ इंग्लिश। सो in playing we are doing a lot of mistake. He said that you don't focus on your grammatical mistake, you only focus on whatever you have a knowledge, whatever you speak well, so don't focus on grammatical mistake. तो वहाँ से मैंने ये काफ़ी कुछ सीख लिया और सुनता आ रहा हूँ। हालांकि मैं काफ़ी डिस्टेंस से है, काफ़ी दूर से मैं आता हूँ, तो वहाँ से मैं सुन के यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ से मैं सुन के वहाँ जाता हूँ पॉडकास्ट। तो मैं अभी आई एम हैबिचुअल टू लिसनिंग ऑल those podcasts that are benefits for me as well as my listening. I improve my listening power. बिल्कुल आप सही हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट लिसनिंग का, इसके बेनिफिट्स मल्टीपल हैं। तो इस टाइम मैं आपसे पूछूंगा कि वो पॉडकास्ट लिसनिंग की हैबिट किस तरह आपको एज अ लर्नर बेनिफिट करती है, उस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। जहाँ तक आपने बेनिफिट्स की बात की है, उसके बेनिफिट्स बहुत से ज़्यादा हैं। मतलब एक पॉडकास्ट अगर 50 मिनट्स का है तो आप उसको एक दफ़ा ना सुने बल्कि 2-3 दफ़ा आप सुने, तो वहाँ से आपकी वोकैबुलरी हैं वो बढ़ जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। ठीक है, तो आप फोकस वहाँ पे सिर्फ लिसनिंग पे ही करते हो। ठीक है, आपको न्यू वर्ड्स मिल सकते हैं, आप उनको गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है उससे। लिसनिंग पावर आपकी इम्प्रूव होती है। जिस तरह नेटिव्स बोलते हैं, उनका एक्सेंट या उनकी जो पेस होती है, जिस स्पीड से वो बोलते हैं, उसके आप यूज़ टू हो जाते हैं और वो आपके लिए नई चीज़ नहीं रहती है, मुश्किल चीज़ नहीं रहती है। इसके अलावा वो जो पॉडकास्ट में आइडियाज़ डिस्कस होते हैं, वो जिस तरह वो आर्टिकुलेट करते हैं उन आइडियाज़ को, तो उससे आपकी किसी मौजू के ऊपर जिसमें आपकी दिलचस्पी है, उस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक इम्प्रूव हो सकती है उनके आइडियाज़ को सुनने से। हाँ, जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग का ताल्लुक़ है, वो आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की इन्फॉर्मेशन सुनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रिकेट देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ तो लाज़मी बात है मैं उस किस्म का पॉडकास्ट सुनूंगा। लेकिन जनरली मैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, हाउ टू इनहांस योर वोकैबुलरी, यू स्पीक विथ योर बडी। फॉर एग्जांपल, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू गिव मी इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ चैलेंज फॉर मी to listen more and more podcast, because I'm not habitual first. No, I'm habitual listening more and more. That's great. I'm pleased to know that you are benefiting from the advice or the help that you got from me. Talking about my own experience when I used to travel to distant places, I always used hand freeze and I would just keep on listening to the podcast episodes. And now, after practicing this podcast listening for more than 2 years, I'm very confident in saying that my speech, my articulation has improved. Along with this, I have improved my language comprehension, as well as I am in a better position to discuss or to elaborate on a topic relevant to social life. I am confident enough to share my ideas. I feel it quite easy to ask questions and to ask people to share their opinion, their experience about things. I think this podcast listening
And these services, they must reach to each and every learned person, especially students who are in colleges, who are just doing their graduate programs in universities. They can benefit greatly from these podcasts. And along with this, I believe that it's not impossible that someday you will yourself initiate a podcast channel and will use this platform to communicate with people and to exchange ideas with people whom you influence. What's your take on this? Yeah, your point of view about the podcast, and you have a lot of knowledge, a lot of information about the podcast because you are habitual. You are getting in all the knowledge you seek from podcast. I'm especially thankful to you that you suggest me that you have urge. You have urge to seek knowledge. You get a lot of information from podcasts. At the same time, I'm not habitual to listen podcast that 60 minutes or more than 60 minutes Lengthy episode. But now I am used to listening a lot of information. I'm getting information energized on my notebook. That's benefits for me. And the master, AJ Hawk, he's a really great Inspirational figure. He's a great person. He knows about the obstacles about student and as well as teacher. He suggests them to listen a lot of podcasts that are beneficial for you as well as your children and your students. They are in an initial step. They are not habitual to listen a lot of grammar, a lot of English what I say, English audio cassettes or audio books. But if you are focusing in on a podcast, then you get a lot of information and you habitual there, and you become habitual. Become habitual. So you advise me such a precious treasure, that a precious treasure for me, but unfortunately, I'm habitual to listen a lot of information from the same your master AJ Hogg. So I'm not interested at that time, but now I'm feeling better. You are not interested. You are not appealed, or you are not attracted towards AJ Hogg and the way he used to articulate, or he used to teach about his ideas about education, about language learning. Now I think you are quite inspired by his his ideas, plus his the way he articulates his ideas. Yeah, sir. His inspiration for me is because he only focus on your ideas. Okay, not that. For example, if I'm speaking English, maybe they are not in a standard way. They are not in a grammatical correct. Okay, but whatever you have an idea, if you are fluent in that, that means you are in a best way. So he focuses more on fluency as compared to vocabulary and sentence structure. Yeah. Is this what you want to say? Yeah. That's great. तो आपके साथ हमारी जो एक मुख्तसर सी डिस्कशन थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार डिस्कशन हुई आपके साथ, और आपने जिस तरह AJ हॉग जो फाउंडर हैं एफर्टलेस इंग्लिश के, उनकी वेबसाइट भी है और डिफरेंट जो उनका अपना जो चैनल है यूट्यूब पे, उससे भी हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स फ़ायदा ले सकते हैं लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के हवाले से। AJ हॉग की एक किताब भी एफर्टलेस इंग्लिश ही के नाम से, उनकी बुक का टाइटल भी एफर्टलेस इंग्लिश ही है। आप आपके लिए अवेलेबल है PDF में, इजीली आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमें, और आई बिलीव मेरा ये मानना है कि इस तरह के एजुकेशनल डिस्कशंस और आइडियाज़ शेयरिंग, ये इसका जो है ना एक सोशल एस्पेक्ट भी है। आप सोसाइटी में एज एजुकेटेड मेंबर के आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वंस अगेन सर थैंक यू सो मच। जहाँ तक आप हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपका खुलूस है, आप दिल के बहुत साफ़ है। हर कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, ये बात मैं आपको कहता हूँ, सच्ची बात है सर, क्योंकि सच बोलना पड़ता है। इंसान, आपको पता है इंसान का नेचर बहुत किस्म के लोगों से बंदा मिलना जुलना होता है, लेकिन जहाँ तक आपसे हमारी दोस्ती का ताल्लुक़ है, ये तो समुंदर से भी गहरा है सर।
سر یہ میرے خیال سے آپ کی لرننگ یا آپ کا علم آپ کے پاس ایک آپ کی سوسائٹی کی ایک امانت ہے جس کی آپ نے حفاظت نہ صرف حفاظت کرنی ہے بلکہ واپس لوٹانا بھی ہے اس سوسائٹی کو. تو ہماری لائف کا ایک سمپل فلسفی یہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر یہ اس میں تو آپ کی کامیابی ہے. آپ اتنے مطلب آپ فیاضی سے لوگوں کو اپنی انفارمیشن دینے کا. حالانکہ لوگ اتنے فیاض نہیں ہوتے ہیں, لوگ کسی کو اپنا ہنر نہیں سکھاتے ہیں. یہ ہر ایک کے پاس اتنا دل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو اپنا ٹائم دے دے. بس پھر ابھی ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم دونوں ساتھ ہیں انشاءاللہ اس سر. فلسفے کو پھیلانے کے حوالے سے کہ جو ہم سیکھیں گے وہ سکھاتے رہیں گے, بانٹتے رہیں گے اور لرننگ میں لوگوں کو پارٹنر بناتے رہیں گے. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ سر. اللہ آپ کو عمر لمبا کرے سر, آپ کو ترقی دے. تھینک یو. بہت بہت